All right, now we've got IELTS listening part 4. Complete the notes below. No more than 2 words. Commonly, it's 1 word and or a number. Sometimes ये होगा 1 word only, ठीक है और कभी कभार ये no more than 2 words भी हो सकता है. अगर कोई पुराना टेस्ट है तो पार्ट 4 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. मतलब ये सारी चीज़ें याद रखनी. ये नहीं सोचना कि पैटर्न चेंज हो गया है. किसी भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में अपीयर हो सकता है. पार्ट 1 में भी मल्टीपल चॉइस आता है. मैंने कुछ टेस्ट ऐसे देखे हैं लेकिन बहुत कम. लाइक मैंने बोला 99% चांस पार्ट 1 में है 1 वर्ड एंड और अ नंबर का, और पार्ट 4 में है 1 वर्ड ओनली का. लेकिन यहाँ पे नो मोर देन 2 वर्ड्स है तो ये भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन आएगा नहीं. 4 बिजनेस वैल्यूज. अब हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस की. एक लेक्चर होगा जिसमें एक बंदा बोलेगा और वो हमें 4 बिजनेस वैल्यूज बताएगा. और वो वैल्यूज क्या क्या हैं देखें, लिखी हुई हैं. कोलैबोरेशन, दूसरी क्या है देख के बताएं, इंडस्ट्रियसनेस, तीसरी क्या है क्रिएटिविटी, और चौथी क्या है एक्सीलेंस. ये 4 बिजनेस वैल्यूज हैं और इस पे पूरा लेक्चर होगा. पार्ट 4 का पर्पस ये है कि जो लोग फॉरेन कंट्रीज में स्टडीज के लिए जा रहे हैं वो वहां पे लेक्चर अटेंड कर सकें और उनको लेक्चर समझ भी आए, ठीक है, और वो साथ साथ नोट टेकिंग जो है वो कर सकें. जो इट्स काइंड ऑफ नोट टेकिंग जो आपने अभी करनी है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31. मैनी बिजनेस वैल्यूज कैन रिजल्ट इन. रिजल्ट इन का वर्ड अंडरलाइन करें. रिजल्ट इन की जगह पे आम तौर पे वो यूज करते हैं कॉज. कॉज का भी मतलब है कि किसी चीज की वजह बनना. रिजल्ट इन. सो मैनी बिजनेस वैल्यूज कैन रिजल्ट इन और मैनी बिजनेस वैल्यूज कैन कॉज. और बिजनेस वैल्यूज की जगह वो यूज कर सकते हैं दे कैन कॉज. दे का क्या मतलब होगा बिजनेस वैल्यूज, ठीक है. जब आंसर आता है ना तो बिजनेस वैल्यूज नहीं बोलेगा, वो बोलेगा दे कैन कॉज, दे कैन रिजल्ट इन, राइट. सो लेट्स सी. In public discussion of business, we take certain values for granted. Today, I'm going to talk about 4 of them: collaboration, hard work, creativity, and excellence. Most people would say they're all good things. I'm going to suggest that's an oversimple view. The trouble with these values is that they're theoretical concepts, removed from the reality of day-to-day business. Pursue values by all means, but be prepared for what may happen as a result. They can actually cause damage, which is not at all the intention. They can actually cause damage. They can cause damage and business values can result in. अब result in का word जहां भी मिल जाए या cause in का word जहां भी मिल जाए ये एक दूसरे को replace करेंगे. आंसर क्या होगा damage. D-A-M-A-G-E. That's right. Let's go on. Question number 32. Senior managers need to understand and deal with. अब सीनियर मैनेजर्स की बात करेंगे कि उनको समझना चाहिए और डील करना चाहिए with the potential dash that may result. Potential की जगह पे बहुत सारे words आ सकते हैं. Potential, for example, answer is potential threat. For example, आंसर क्या है threat, धमकी जिसको हम कहते हैं. तो ऑडियो में क्या बोल सकते हैं a threat that may arise. A threat that may arise. Business leaders generally try to do the right thing, but all too often the right thing backfires if those leaders adopt values without understanding and managing the side effects that arise. The values can easily get in the way of what's actually intended. और जिसके साथ आप बैठे हुए ना उसको हर बुक का हर आंसर जुबानी याद है, ठीक है. वो अगर आप अगले का क्या आंसर है, हाँ देखिए उससे उसको सारे आंसर याद हैं जुबानी. कौन सी किताब से कौन सी किताब तक किए हुए 11 से 18 तक जितने रीडिंग और लिसनिंग सारे याद किए हुए जुबानी. माशाल्लाह, देखा स्किल्स हैं ये. ऐसे होता है आइल्स, राइट. ओके, उसको पहले ही बता देता है कि ये आने लगा है, ठीक है. ये है ओके. ये फिल्म मैंने पहले भी देखी हुई है. एनीवेज, सो व्हाट इज द आंसर, दोबारा सुनिएगा यहाँ. Business leaders. अब आपने आंसर बोलना नहीं है, ठीक है, और आपने सुनना नहीं अगर ये बोले तो. ये एग्जैक्टली उसको वैसे ही सारे आंसर आते हैं जुबानी. देखा ना अगले का भी. अब मैंने ऑडियो भी नहीं चलाई, उसने अगले का भी बता दिए. ये होता है टैलेंट, ये होती है पहुंची हुई सरकार. Generally try to do the right thing,
But all too often, the right thing backfires if those leaders adopt values without understanding and managing the side effects that arise. The side effects that arise. So side effects that arise का मतलब है potential side effects. अब potential का word दोबारा नजर आ गया या that arise का word दोबारा नजर आ गया तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे. किसमें? साइड इफेक्ट्स में देखें वैसे तो उन्होंने लिखा हुआ है 2 वर्ड्स, तो आप दोनों वर्ड्स अलग अलग लिखते हैं तो ठीक है, अगर आपने हाइफन देना है तो आप दे सकते हैं. हाँ, और एक्चुअल एग्जाम में भी अगर कुछ समझ ना आए तो हेडफोन उतार के गुस्से से उनको कहना रिपीट करें इसको. ओके या वो नहीं करेंगे, दोबारा बता रहा हूँ. राइट, ओके. Generally try to do the right thing, but all too often the right thing backfires if those leaders adopt values without understanding and managing the side effects that arise. Okay, without managing the side effects that arise. अच्छा जी, नेक्स्ट है कोलैबोरेशन. Next is collaboration. Collaboration during a training course, the speaker was in a team. कि एक training course हुआ, उस training course में speaker एक team में था that had to build a very simple. उस team को जो चीज़ बनानी थी, that will be your answer. Build को underline करें. Build की जगह पे क्या आ सकता है? Build, construct, make, create. कुछ भी ऐसा वर्ड. अब आपने सिर्फ ये सुनना है कि उस टीम को क्या बनाना था, यानी राइटर एक टीम में था, टीम वर्क था, उस टीम को कुछ बनाना था. दैट विल बी द आंसर. Okay, so the first value I'm going to discuss is collaboration. Let me give you an example. On a management training course I once attended, we were put into groups and had to construct a bridge across a stream using building blocks that we were given. All right. Had to construct a bridge. तो build a उसकी जगह पे क्या आ गया? Construct a. ठीक है, पार्ट 4 उतना मुश्किल नहीं होता जितना पार्ट 3 होता है. तो खुदा ना खास्ता अगर पार्ट 3 में कुछ आंसर्स मिस भी हो जाएं तो हिम्मत नहीं हारनी, पार्ट 4 में आप उसको वापस ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. अदर टीम्स एक्सपीरियंस्ड डैश फ्रॉम ट्राइंग टू कोलैबोरेट. अब जो बाकी की टीम्स थी उन्होंने किस चीज को एक्सपीरियंस किया कोलैबोरेट करते हुए? एक्सपीरियंस्ड का वर्ड अंडरलाइन करें. एक्सपीरियंस्ड. अच्छा, अगर फर्ज कर लेते हैं आंसर है इसका आर्ग्यूमेंट. अदर टीम्स एक्सपीरियंस्ड आर्ग्यूमेंट, उनका आपस में झगड़ा हो गया. ठीक है, एक्सपीरियंस की जगह पे बहुत सारे और भी सिनोनिम्स आ सकते हैं, बट फॉर नाउ यू नीड टू सी अदर टीम्स डिसेंडेड इनटू आर्ग्यूमेंट्स. डिसेंड इनटू का मतलब है किसी चीज का शिकार हो जाना, कि वो झगड़े का शिकार हो गए. ठीक है, अदर टीम्स डिसेंडेड इनटू आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सपीरियंस्ड आर्ग्यूमेंट्स. तो एक्सपीरियंस्ड की जगह पे आ जाएगा डिसेंडेड इनटू. DECENDED, descended into. But it was really a job best done by one person. The other teams tried to collaborate on building the structure and descended into confusion, with everyone getting in each other's way. Okay, other teams descended into confusion. So, experienced confusion or descended into confusion. ये अपने साथ साथ vocabulary सीखनी है, और ये वो vocabulary है जो repeat होगी. यही words कहीं और भी आएंगे. Next, we've got question number 35. The speakers team won because they reduced collaboration. Okay, next. Sales of a dash were poor. अब इसका मतलब है आंसर होगा कोई प्रोडक्ट. Sales of a dash were poor. For example, sales of a car were poor. Were का मतलब है sales, यानी sales plural है ना, तो were जो है वो sales की वजह से plural आ रहा है. ठीक है, अदरवाइज आंसर आपका सिंगुलर ही होगा. अब किस चीज की sales poor थी? Because of collaboration. देखिएगा, आंसर प्रोडक्ट होगी, कोई भी जनरल प्रोडक्ट. या Teamwork can also lead to inconsistency, a common cause of poor sales. In the case of a smartphone that a certain company launched, one director wanted to target the business market, and another demanded it was aimed at consumers. The company wanted both directors to be involved, so gave the product a consumer-friendly name, but marketed it to companies. The result was that it met the needs of neither group. It would have been better to let one director or the other have his way, not both.
So, sales of what? Smartphones. Exactly. They talked about smartphones first and then they went on with it. Now, teamwork can also lead to inconsistency, a common cause of poor sales. A common cause of poor sales. अब किस चीज की? In the case of a smartphone, that In the case of a smartphone, poor sales. In the case of a smartphone, और आगे वो पूरी एग्जाम्पल दे रही. So answer is smartphone. कितने वर्ड्स हैं ये? 2, क्योंकि लिखा हुआ है ना नो मोर देन 2 वर्ड्स, तो आप स्मार्टफोन अलग अलग लिखेंगे. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियसनेस, अगली बिजनेस वैल्यू. हार्ड वर्क मे बी अ बैड यूज ऑफ वेरियस कंपनी डैश. कि हार्ड वर्क, फर्ज करें जी आप हार्ड वर्क करते हैं, मे बी अ बैड यूज ऑफ वेरियस कंपनी व्हाट. कंपनी की कौन सी चीज है जिसको आप हार्ड वर्क के जरिए बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं? व्हाट इज दैट? now, industriousness or hard work. It's easy to mock people who say they work hard. After all, a hamster running around in a wheel is working hard and getting nowhere. Of course, hard work is valuable, but only when properly targeted. Otherwise, it wastes the resources that companies value most, time and energy. Okay. And that It wastes the resources. Waste का क्या मतलब है? Bad use of. Exactly. So bad use of and wastes, and answer is resources. ये वाला पार्ट दोबारा सुने. Of course, hard work is valuable, but only when properly targeted. Otherwise, it wastes the resources that companies value most. It wastes the resources that company values most. So, a bad use of various company resources. Next, the word lazy in this context refers to people who avoid doing tasks that are dash. अब ये that are का word जो है ना, इसको ज़रा समझें कि ये क्या है. IELTS में आपको लिस्टिंग में मिलेगा that is, for example, food that is healthy. फर्स्ट करें सेंटेंस है फूड दैट इज हेल्दी. IELTS में क्या करेंगे? लिखेंगे फूड दैट इज, आगे डैश होगा. ऑडियो में क्या बोलेंगे? हेल्दी फूड. हेल्दी फूड का क्या मतलब है? फूड दैट इज हेल्दी. ये इनकी स्ट्रेटजी, ये मैंने 4-5 जगह पे देखा है. ठीक है, अब यहां पे भी उसने वही टेक्निक लगाई है. अवॉइड डूइंग टास्क्स दैट आर. फर्स्ट करें आंसर है टास्क्स दैट आर डिफिकल्ट. ऑडियो में बोलेगा डिफिकल्ट टास्क्स, या फिर क्या बोलेगा? टास्क का सिनोनिम लगा देगा और उससे पहले आंसर आ जाएगा. ठीक है, और ये बड़ा कॉमन है. there's a management model that groups people according to 4 criteria: clever, hardworking, stupid, and lazy. Here, lazy means having a rational determination not to carry out unnecessary tasks. It doesn't mean trying to avoid work altogether. Okay, not to carry out unnecessary tasks. तो क्या मतलब हो गया? Tasks that are unnecessary. बात समझ गए ना? और ये दोबारा भी कहीं पे आ सकता है. जब भी आ जाए that is, that are, it's going to be like this. Okay, unnecessary spelling ठीक होनी चाहिए, और ये एक वर्ड है unnecessary. Next question number 38. Creativity. An advertising campaign for a, again answer is a product. कि advertising campaign उन्होंने किस चीज़ की लगाई? ठीक है, advertising की बात करेंगे, campaign की, जिस चीज़ की campaign थी, that will be your answer. Was memorable but failed. Next, we come to creativity. This often works well. Creating an attention-grabbing TV commercial, for example, might lead to increased sales. But it isn't always a good thing. Some advertising campaigns are remembered for their creativity without having any effect on sales. This happened a few years ago with the launch of a chocolate bar. Subsequent research showed that plenty of consumers... Okay, this happened few years ago with the launch of a chocolate bar. अब product क्या है? Chocolate bar. So campaign for a chocolate bar. खाली chocolate भी ठीक है, अगर one word only होता तो आप chocolate लिख सकते थे, लेकिन अब एक चीज़ और भी है. यहाँ पे आ गया आ. Chocolate जो है ना वो uncountable noun है. Countable कैसे बनता है? जब उसके साथ bar लगता है. आ chocolate bar. ठीक है, सिंगल हो जाएगा वो. तो चॉकलेट बार पूरा लिखेंगे, BAR बार. Okay, next question number 39. Creativity should be used as a response
to a particular dash. Creativity use होनी चाहिए as a response to a particular. अब particular की जगह पे उसका synonym लगेगा. Particular dash, certain dash or anything like that. A company that brings out thousands of new products may seem more creative than a company that only has a few, but it may be too creative and make smaller profits. Creativity needs to be targeted to solve a problem that the company has identified. Just coming up with more... Okay, creativity should be targeted to solve a problem that the company has identified. Answer क्या होगा? अच्छा, अब मुझे ये बताएं पर्टिकुलर की जगह पे क्या आ गया? कंपनी हैज आइडेंटिफाइड. अब जिसको कंपनी ने आइडेंटिफाई किया वो प्रॉब्लम क्या होगा? पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा. ये चीजें समझनी है, ठीक है? अंधाधुंध लिसनिंग नहीं करनी, ठीक है? सो आंसर इज कंपनी हैज आइडेंटिफाइड और प्रॉब्लम आंसर हो जाएगा. Okay, let's go on. Next, last one is excellence. आखिरी business value excellence. According to one study, on average, pioneers had a dash that was far higher than that of followers. अब एक होते हैं pioneers, एक होते हैं followers. Pioneer क्या होते हैं? जिन्होंने सबसे पहला मोबाइल फ़ोन दुनिया का बनाया. Followers क्या हैं? जिन्होंने उसको कॉपी करके बाकी के मोबाइल फ़ोन बनाए. ठीक है, सबसे पहला दुनिया का क्रेडिट कार्ड जिस बैंक ने दिया वो पाइनियर है. बाद में जिन्होंने उसको फॉलो किया, क्रेडिट कार्ड दिए, डेबिट कार्ड दिए, वो क्या हैं? फॉलोअर्स हैं. सो वो क्या बोल रहे हैं कि पाइनियर्स हैड अ डैश दैट वाज फार हायर. कि पाइनियर्स की कौन सी चीज़ है जो हायर होती है फॉलोअर्स से? उनकी सेल्स हायर होती है या उनकी मतलब इनकम हायर होती है? जो चीज़ पाइनियर्स की हायर होती है और फॉलोअर्स की लो होती है, दैट विल बी योर आंसर. And finally, excellence. We all know companies that claim they strive for excellence, but it takes a long time to achieve excellence. In business, being first with a product is more profitable than having the best product. A major study of company performance compared pioneers, that is, companies bringing out the first version of a particular product, with followers, the companies that copied and improved on that product. The study found that the pioneers commanded an average market share of 29%, while the followers achieved less than half that, only... Okay, pioneers got 29%, followers got less than half that. कौन सी चीज़? Market share. ठीक है, अब यहाँ पे देखें pioneers had a dash far higher की जगह पे आ गया 29%. और फॉलोअर्स का कितने? लेस देन हाफ दैट. लेस देन हाफ दैट का मतलब है 14.5 से भी कम है. थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है? प्लीज लिसन अगेन दिस पार्ट. Pioneers, that is, companies bringing out the first version of a particular product, with followers, the companies that copied and improved on that product. The study found that the pioneers commanded an average market share of 29%. While the followers achieved less than half that, only 13%, even though their product might have been better. Okay? All right, that's good.